I always believe that museum is the source of knowledge. एक Assamese Mahabharata, in fact, Assamese manuscript was on Okay. this. अभी वर्ल्ड के जो रिनॉन म्यूजियम्स है ना, आपको मैक्सिमम में नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के एलुमनाई मिल जाएंगे. तो हम इंडिविजुअल लेवल में जब कॉन्शियस हो जाएंगे, इंडिविजुअल लेवल में हमारे जो वो अवेयरनेस आएगा कि आवर पार्ट ऑफ हेरिटेज, वी शुड टेक केयर ऑफ इट एंड वी शुड प्रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर. शायद वो मोबाइल एरा नहीं था, इसीलिए फ्रेंडशिप इतनी लंबी टिकी. डू यू बिलीव दैट? हाँ, एब्सोल्युटली, मैं तो यही सोचती हूँ. अभी जरूरत ही नहीं है मेरे फ्रेंड्स की, मोबाइल है. हाँ. सब के लिए एक ही फ्रेंड है, एक मोबाइल. A chance to go to the British Museum all over in the world. There are total, I think, 9 pieces of Vrindavani Vastra. Get emotional, like oh, can't believe कि मुझे ये देखने को मौका मिल रहा है. असम में अनफॉर्चुनेटली नहीं है. मैम, तो ये जो वृंदावनी वस्त्र के बारे में आपने बताया, कैन इट नॉट बी रिक्रिएटेड? आई मीन यार, इंडिया की चीज है, इंडिया में ही एग्जिस्ट नहीं करती. क्या आपने वृंदावनी वस्त्र का नाम सुना है? शायद ना सुना हो. चलिए मैं बताता हूँ. 16th सेंचुरी में बनाया गया वृंदावनी वस्त्र असमीज कल्चर का एक बहुत सीक्रेट पार्ट है. पर क्या आपको पता है आज इंडिया में सिर्फ इसका एक पीस अवेलेबल है? ऐसा क्यों? ये शायद मुझसे बेहतर आपको वो बता सके जिन्होंने म्यूजियोलॉजी की पढ़ाई की है, एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई की है. तो आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर संगीता दत्ता. शी इज अ म्यूजियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, archive expert, a former Rutherford Fellow at the British Museum, and the list goes on and on and on. तो आज के पॉडकास्ट में हमने असमीज कल्चर को इन डेप्थ तक एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, म्यूजियम्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी वो क्या होता है, उसमें करियर कैसे बनाए, म्यूजियोलॉजी में करियर कैसे बनाए. शी इज करंटली वर्किंग विद आदित्य बिल्डर ग्रुप, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग. ओके, सो आज के पॉडकास्ट में ये सारी बातें की है इंडियन म्यूजियम्स के बारे में, फॉरेन म्यूजियम्स के बारे में. सो विदाउट फर्दर अडू, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पर्सनालिटीज. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एंजॉय द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. हाउ आर यू? वेलकम टू एक्सप्लोरिंग माइंड्स. Thank you. हाउ आर Hi. यू? Good afternoon. Okay. Good, good. How ओके. about you? आई एम ऑल्सो गुड. मतलब बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, फाइनली वी आर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट. तो मैम, आज बिहू है. बिहू है, बहुत खूबसूरत त्योहार है हमारे देश का. एंड आप आसाम से भी है. तो हाउ अबाउट वी स्टार्ट द पॉडकास्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट असम, उसके कल्चर, हेरिटेज के बारे में, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट, राइट? Yeah, of course. It's a pleasure for me to speak about Assam. I'm an Assamese, and yes, today is Bihu. Also, Bihu is the major traditional festival of Assam, and today is the Bohag Bihu. We call it Bohag Bihu or Rangali Bihu. There are three ओके. Bihus, but today is the day of the Baisakhi. It's all over India. Actually, the same the festival is celebrated. So in Assam, we call it Bihu. So it's Baisakhi basically. So this ओके. is the Assamese calendar also starts. Today is the like New Year's Day also. Assamese calendar अच्छा. according to the Assamese calendar, हम्म. and this is so this Bihu is basically. Uh, I'm coming to the cultural heritage part of Assam, also me being a cultural heritage management professional. So हम्म. this Bihu, as I say, there are three types of Bihu, but this particular Bihu is all about enjoyment, merrymaking. It's a spring festival, and this is really agriculture festival. It has many significance, many associated relevance of this Bihu with the agriculture cycle. But हम्म. Bihu is celebrated along with all the rituals. This is the हम्म. time for Bihu dance, Bihu songs, हम्म. and like nowadays, of course, the celebration process has changed. But हम्म. yeah, this is one of the major festival, major Bihu. And today, specifically today is we call in Assamese it's Garu Bihu, like it's for the cattle actually. So first, हम्म. before human, it is celebrated for the cattle or the livestock actually. So ओह. they are given bath and all rituals. Today is for the cattle, and tomorrow will be for the human. ओके. And traditionally, this is for 7 days.
सात बिहू बोलते हैं इसे. Actually, it's a अच्छा. 7 days celebration. So every day has a separate significance. And it starts Uh-huh. with गाय के Uh-huh. साथ. Okay. Okay. So, along with Bihu, since we are talking about Bihu, even if we talk about Assam, we all know it's in the northeastern part of India. Uh, you can say cultural, not only cultural heritage, natural heritage. It's a very rich state, very rich region of India, and it is yet to be completely explored. Of course, though Mm. now it has got good connectivity, and now it is very much connected to the mainland. But Mhm. still, it's a beautiful place, and there are still lots to be explored in Assam and then entire Northeast. Actually, though I am an Assamese, I am from Assam, but we don't talk Assam, very separately. We always talk about Northeast India. We are part of Northeast India, and Assam Okay. is part of the Northeast India, and Uh-huh. it's we all are very connected. All the Uh-huh. northeastern states, it's Uh-huh. all connected. हम Uh-huh. Assamese बोलते हैं, and also Assam is inhabited by homogeneous populations. So Uh-huh. anybody from Assam, outside Uh-huh. Assam, हम बोल देते हैं Uh-huh. हम Assamese हैं. Hmm. But Ah. that Assamese may be from the caste population, from the tribes. It can be anyone living in Assam. But outside Uh-huh. Assam, हम सब Assamese हैं. हम कोई नहीं पूछेंगे you Okay. belong to which community. So we all are Assamese. People from Hmm. Assam are. But in the state, we have not Uh-huh. many tribal population, caste population, Uh-huh. Uh-huh. all are Assamese. And this Mhm. Bihu, coming back to this celebration, Bihu is Mhm. celebrated by almost all the communities of Assam. There are separate procedures, of course, the different rituals, but this day is significant for almost all the communities of Assam. Okay. 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 So, like you told that त्योहार पहले और अभी सेलिब्रेशन हैज चेंज्ड व्हाई डू यू थिंक इट हैज चेंज्ड और कैसे चेंज हुआ है मतलब क्या डिफरेंसेस है जब आप एक छोटे थे व्हेन यू वर इन योर चाइल्डहुड एंड नाउ दैट यू हैव चिल्ड्रन हाउ हैज इट चेंज्ड Uh, change means say change with the time. Of course, Bihu, our forefathers, the way Bihu was celebrated, no, it was a हम्म completely different. As I said, this is connected to the agriculture. Yeah. हम्म So the occupation has changed. The whole process has changed. So along with that, the celebration process has also actually changed. So earlier, Bihu at the village level, people will gather in the open field, and they all, like especially youngsters, they will dance, they will sing, and they will enjoy. And also we have a ritual called Husori, like people, especially it's not only youngsters, but of course there are grown-up people also. They go from house to house, and they go and they give आशीर्वाद जो देते हैं, like it's हाँ 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 visiting every household. They go in a group हाँ, and visiting every अच्छा household, give the blessings to the people. So it's a process. That process is still there, but along हाँ with हाँ that, it's a more community-based celebration. It's but nowadays, of course, uh, how many people are now doing completely based on agriculture. The occupation have changed, the whole entire process has changed, but yes, हम्म the core part is still there. Bihu is still celebrated. The हम्म rituals are still followed. Yes, करने का थोड़ा तरीका बदल गया है. It is like, along with time. Nowadays Bihu हाँ is in urban areas especially stays में होता है. पहले हाँ हाँ ओपन फील्ड में होता था. सो फ्रॉम दैट ओपन फील्ड इट हैज ऑलरेडी शिफ्टेड टू स्टेज. तो आर्टिस्ट है अभी गाना गाने वाला, वो सब चेंज हो गया. बट ऑफ कोर्स द हाँ बिहू डांस, बिहू इज ऑलवेज इन ग्रुप. इट इज परफॉर्म्ड हम्म इन ग्रुप. सो वो तो हम्म अभी भी है. इवन इन हाँ स्टेज बिहू इज परफॉर्म्ड इन ग्रुप, एंड बिहू इज या बिहू. It just makes या everyone happy. Everyone, it's a time एग्जैक्टली for enjoyment. आई थिंक जैसे जो
हम नॉर्मली रहते हैं तो सब किसी के मन में किसी को लेके मन मुटाव होता है. There are always people having grudges with each other, with the neighbors and all. But when festivals like Bihu comes, that जैसे आपने कहा कि घर घर जाके हम आशीर्वाद लेते हैं. I think festivals are meant to unite people. Can you see that? Yeah, everything is forgotten. उस time पे कुछ Yeah. नहीं रहे. So everything is forgotten, and it's a, Uh-huh. you know, it's a kind of by default people visit each other and then greet. Mm. बड़ों Mm-hmm. को बड़ों से आशीर्वाद लेना. It's all. And also you must have heard of that gamucha. Gamucha is Yeah. sorry, I didn't keep up gamucha with me. So now too it has got GI tag also. Now, gamucha is a Mm-hmm. hand towel, and it's a Mm-hmm. woven piece. It's weaved in some Mm-hmm. red and white color का basically Mm-hmm. होता है. So gamucha is also associated with Bihu, and you know before Bihu, people start weaving gamusa, and then whoever goes, like greeting with a gamusa is their tradition. So Okay. many aspects, and उस time पे सब same है सबको like it's a time that you can show love and Uh-huh. respect, and it's a Uh-huh. वही शुरुआत होता है एक whatever has happened and happened like अच्छा. forgotten, and एक नया शुरुआत है, नया साल भी है. So Uh-huh. many what say inherent meaning, अभी Mm-hmm. सिर्फ it's not that just dance and music, the rituals Mm-hmm. ना सबका Mm-hmm. अलग अलग significance है. It's a Mm-hmm. Mm-hmm. altogether different हाँ. way. और वो तो फ्लेवर वो you रह ही जाता है, बिहू इज सेलिब्रेटेड, रह ही जाता है थ्रू और लाइक इन असम यू गेट exactly. दैट. Exactly. In fact, not just Assam. I have studied most part of my school in West Bengal. So जब भी कोई function होता है ना, one dance would definitely be of Bihu dance. या Definitely. Be it an annual function or be it farewell or be it anything. And that is really nice. I mean, it's wonderful. very vibrant, very colorful, Yeah, and the colorful. Yeah. material culture. If you say that material culture associated with the bihu, na, that japi we call that shade hat. You can say like Mm-hmm. जो agriculture land में जब खेत पे जाते थे लोग ऐसे पहन के जाते थे. It's a kind of Uh-huh. hat, you can say big hat. So Uh-huh. that has Uh-huh. now been made with a decorative piece बन गया है. But that Uh-huh. hat is also connected with the bihu. जापी हम बोलते हैं इसको. Mm-hmm. And gamusa is there. Then of course that muga, that mekhla chadar ना, that traditional dress जो पहन के ये that अच्छा. muga, it is called muga. The two silk है ना Assam में जो Uh-huh. पाट and muga. Uh-huh. So Uh-huh. muga is also associated with the bihu. So if you see the material culture also ना overall, if we go to the food, then food में तो ये आ जाता है like various kinds of snacks, various kinds of Uh-huh. like rice cakes, I would say based on Okay. rice जो local level होता है. So it's like बहुत खाना पीना, dance, music, so all together developed. It's not only one aspect. सिर्फ ritually Uh-huh. नहीं है, सब Uh-huh. कुछ फेस्टिवल्स के साथ जुड़े हुए हैं. एंड ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ एन आसमीज लाइफ. सो ऑल Uh-huh. टाइम आपको दिख ही जाए. यू एंटर एन Mhm. आसमीज हाउस होल्ड, you will get to see the gamusa or the zapi, or even that, as I said, that in the husori, when people take आशीर्वाद जब लेने जाते हैं, so we Uh-huh. offer tamul pan, the betel nut and leaf, that is a Yeah, typical for yeah, Assam. yeah, yeah, And yeah. so tamul pan is also offered in a, we call it in Assam, it is called horai. Horai is kind of, you can say, it's a plate with a stand kind of, and it is also made of bale metal. Bale metal is in Assam still bale metal products are made with handmade. We have not Okay, started the handmade products. Still bale metal is that alloy of copper and tin, if I'm not wrong. okay. So it's a typical bale metal product, typical of Assam, and Uh-huh. that that horai made of bale metal. In that horai, we don't offer anything in hand. मतलब एक हाथ Uh-huh. से दूसरे हाथ पे ऐसे हाथ से नहीं पकड़ाते. Always it is अच्छा. offered in horai, and then it is offered. So Okay, okay. many things are associated.
Is there a reason behind doing it? मतलब हाथ में क्यों नहीं पकड़ाते हैं? मतलब why a bell metal? It's just to show the respect. It's like bell metal. Bell metal is, of course, it's a product there. So it is हाँ हाँ the normal tradition भी जो तामुल बोल रहे हो ना आप एक आसमीज के घर जाएंगे ना you will be offered first the तामुल is given not the पानी हम्म नहीं पिलाते like तामुल पान देते so when even tamul is also given to that bota we call or hora हाँ it हाँ is not मतलब हाथ से हाथ में नहीं पकड़ाता always with in a अच्छा offered in a plate मतलब कुछ भी अच्छा आप खाने पे कुछ भी ऐसे हाथ से नहीं देते हैं ना प्लेट में ऑफर got होता है it तो got सिमिलर it वॉट एवर मुझे प्लेट में दिया जाता है और एंड हाँ वी हाँ ऑफर इट इन दैट बसा और हराई लाइक that's so nice that's so nice मैम जैसे बहुत सारे लोगों को ना नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है ना नॉर्थ ईस्टर्न जो दैट स्टेट्स है आपने भी कहा तो व्हाई शुड समवन कम टू असम so that more people come to Assam maybe नॉट ओनली टू असम जो असम आता है ना उनको नॉर्थ ईस्ट का बाकी स्टेट्स भी घूमना चाहिए सब कुछ है Mhm, वहाँ पे वेरी वाइब्रेंट वेरी कलरफुल फ्रॉम नेचुरल हेरिटेज इवन इफ यू स्टार्ट विद द क्लाइमेट वहाँ पे ना गर्म होता है ना ठंडा होता है सो फ्रॉम द mm, क्लाइमेट टू द या वहाँ पे वेदर ऐसा एक्सट्रीम कुछ नहीं है वहाँ पे सो uh-huh. ऑल टुगेदर वहाँ पे आप अगर अरुणाचल चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्नोफॉल भी दिख जाएगा एंड इफ यू गो टूवर्ड्स द अच्छा चेरापूंजी इन मेघालय इट इज वहाँ पे तो हाईएस्ट रेनफॉल होता है वहाँ पे rainfall yeah फल yeah मिल जाएगा so it's very vibrant very colorful you start with that culture you start with the like culture to term हो जाएगा if you start with say the natural beauty food mhm mhm ऑफ कोर्स लाइक रिलीजियस एस्पेक्ट से जैसे बहुत लोग कामाख्या विजिट करते हैं दैट कामाख्या देवी वन ऑफ द uh-huh most powerful yeah mother goddess temple is uh-huh also there and uh, and it is like kind of if you go little up towards Arunachal you will get more Buddhist monasteries Buddhist spots also and from religious point of view मैं बोल रही हूँ but otherwise it's very vibrant very beautiful all throughout the year one can you know one can enjoy and one can have their options कि ज्यादा बारिश में जाना है तो या हाँ ठंड में जाना है अच्छा jungle में you have all the हाँ options but of course as I said that uh, it's not only Assam one should visit the other parts of North East and it's very closely connected अच्छा mhm communication है mhm कुछ mhm very mhm beautiful okay wonderful I think I'll get to visit somewhere yeah तो मैम yeah. आपने कामाख्या की बात की that it's very powerful have you been there Yes yes of course. so why do you call it powerful? Matlab, what do you feel like everyone, every now and then people say that its vibrations are very powerful, that you get to feel something that it's not readily available everywhere, I think. So do you think, Not, it's not readily available see this is completely one's own perspective and Mhm, Assam that if you see that Sakti tradition that is from that angle I'm saying about Kamakhya. But mhm, Assam mein majority of the population they follow Vaishnavism, that Neo Vaishnavism. We follow Neo okay, Vaishnavism, the Satra mhm, tradition that I told you before also. Satras are like Buddhist monasteries. okay, Similar, not same. mhm, But mhm, the whole Assamese culture, if we go only with the Assam, the whole culture mhm, of Assam has been developed. It is based on the socio-religious, cultural aspect of entire Assam is based on the Neo-Vaishnavism, which was introduced to the people of Assam by Srimanta Sankardeva. So it's okay, a you can say let's not get into that details, but it is more connected to the Bhakti tradition. So mhm, उस time से शुरू हुआ है and the entire Assamese culture is shaped with the by this uh, mhm, Neo Vaishnavism. So mhm, best part of Assam is ये दोनों parallelly चलता है वहाँ पे Neo mhm, Vaishnavism है if you ask me personally we follow that line, but that doesn't mean that we don't go to the Sakti
bit also. So, but as I said, that this is a very powerful. This thing is completely one's own perspective. But there is Mhm. solidarity. सब लोग वहाँ पे सब रिचुअल्स मानते हैं, सब पूजा पाठ होता है वहाँ पे, सब सब कुछ फॉलो करते हैं. As I Mhm. told you, coming back to that point that we are Assamese, so anybody from Assam are Assamese, and एवरीथिंग इज देयर इन असम एंड आउटसाइड दिस बस असमीज है. तो वहाँ पे कोई Okay. खमन जा रहे, कोई सत्रह जा रहे. हाँ, यस, दैट इज वन. यू व्हेन यू आर आस्किंग मी ना, माजू सॉरी, असम क्यों आए, तो माजुली, माजुली इट वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड. और वहाँ पे जो सत्रह ट्रेडिशन का इवन अभी भी जो that whole, what to say, the living heritage, you can say, Mhm. it's still there, and one must Okay. visit to Mhm. understand actual music Mhm. culture. Yeah, it's also Okay. there. Okay. Yes, so Wonderful. Like my father has been to Kamakhya, but I have not got the blessings yet. So maybe someday. you, yes, yes, definitely you. Now that you have moved out of Assam, you are a cultural heritage professional. You describe yourself as a cultural heritage professional. Uh, Yeah. who are these people? क्या काम करते हैं ये? कौन है ये? So we deal with culture broadly, if I, and let me say art, heritage, and culture. So it is हाँ, हाँ, cultural heritage management. It includes everything, the existing. It is, you can say, the existing part of our heritage, how we mhm, can preserve that part of the heritage for our mhm, future generation. So, mhm, of mhm, course, this is done through various institutions, various, mhm, say, museums, archives, and mhm, other similar cultural mhm, institutions. mhm, mhm, Basically, what we have received from our forefathers, mhm, how we can preserve those for our mhm, future. mhm, So, mhm. we deal with this entire domain, you can say. Okay, okay, okay. And You the mentioned plus, the word archive. yes, Okay. You mentioned the word archive. Oh, archive क्या होता है? archive क्या होता है? Archive, for to simply understand, archive एक एक you can say it's a resource center. We can say it's a center. It's a source जहाँ Mhm, पे आपको all types का records मिल जाएगा, information which you can use as a user mhm, for your work, and in that mhm, archive we preserve it for the future. Again, the coming back to that thing. So I'm trying to make it, explain it in a very simple language. simpler. I Uh, get it. Yeah. so say, सपोज आपके आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके Mhm, ग्रैंडफादर के पास कोई, से जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, आपके ब्रिटिशर्स के टाइम पे सपोज ही वाज वर्किंग, योर ग्रेट ग्रैंडफादर वाज वर्किंग विद द mhm, ब्रिटिशर्स. तो mhm, उस टाइम पे सपोज उनके पास कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, उनके पास कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो ग्रेट mhm, ग्रैंडफादर से प्रोबेबली अपने ग्रैंडफादर के पास भी, और मे बी इट हैज रीच टू योर डैड और ऑल्सो अप टू यू. सो यू जस्ट नो mhm, दैट कुछ इससे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है. तो mhm. वो, अगर आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स घर पे ही रखे रहेंगे, तो nobody will know Mhm. about it. Maybe there may, Exactly. some important aspect of history, some important aspect of information is there which we don't know. तो आप Mhm, अगर वो, अगर किसी आर्काइव को दे दिया, अगर किसी आर्काइव ने उसके ऊपर mhm, काम करके, देयर सर्टेन प्रोसेस ना, आर्काइवल जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, मेटा डेटा क्रिएशन से लेके mhm, डिसेमिनेशन. तो mhm, एक आर्काइव mhm, में रख दिया, तो अगर उसको प्रोसेस किया हम लोगों ने mhm, एज mhm, आर्काइव प्रोफेशनल, तो mhm. द वर्ल्ड विल नो. Okay, so Mm, it is not only the information but also the knowledge. If it mm, is kept within yourself, the knowledge will remain with you only. But mhm, once you know make it available for the people, so people will get mhm, benefited, and
mhm, that world will get to know that inherent mhm, information. मतलब knowledge mhm, spread होगा basically, mhm. knowledge spread होगा उधर से। Exactly, exactly, रखा रहेगा तो अपने पास exactly. ही है, ऐसे रखा ही रहेगा, isn't it? Yes. Also, it is not only that knowledge or his process में uh, this the whole record will be taken care, no? Record will be Mhm, taken care means क्या बोलूं, uh, if physically also suppose वो रिकॉर्ड mhm, इतने सालों से है आपके पास तो नॉट इन अ गुड कंडीशन, तो उसको प्रॉपरली mhm, प्रिजर्व किया जाएगा, उसको mhm, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और उसको बार बार mhm, हैंडल करने के लिए क्या करना है, वी कैन डिजिटाइज इट एंड मेक इट इजीली अवेलेबल, बहुत प्रोसेसेस है, बट mhm, बेसिकली मतलब टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, तो mhm, कलेक्शन भी है ही, उसको अच्छे से प्रिजर्व mhm, भी करना है और उसको डिसेमिनेट भी करना है, so all mhm, everything happens in archives. mhm, mhm, mhm. So, Uh, yeah, 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 continue, continue. yeah, it's a very broad aspect. So I'm just trying to summarize, Uh-huh, and I'm trying to make it. I uh-huh. hope it is So, something we people have. maybe people people must be very resistant ना कि उनकी धरोहर है वो देते नहीं है तो resistance happens. Yeah, ये फिर as a cultural heritage management professional, it is our responsibility to make people aware that Mhm, you can share your part of heritage. ठीक है, आपका है वो तो कोई वहां से कोई नहीं आपसे छीन सकते, बट mhm. won't it be beautiful to share it with the world, isn't it? Yeah, ये yeah. हमारा है, we do acknowledge. तो आप अगर कोई जैसे आप आसपास भी किसी के पास भी ऐसा होता है, तो आसपास के अगर म्यूजियम हो या आर्काइव्स में अगर देना भी चाहते हैं, तो इट इज Mhm, ऑलवेज एक्नॉलेज, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे हड़प लेंगे, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। So it's a mhm, matter of pride when you are sharing it with the world that see mhm. this is our part. हाँ, yes, of course होता ही है, लोग पॉजिटिव होता है अपने साथ ये इसको लेके, but it is the duty for us people like us to make them aware, to Ah, got it. organize that kind of you can say uh, awareness campaign, like Uh-huh, make uh-huh, people aware. In fact, uh-huh. through museums or archives उल्टा अच्छा रहेगा आपका, जो भी धरोहर है आपका ये है, so Ah, it will be preserved for lifetime, right? yeah. But Ankit, I have to say we are talking in terms of the uh, individual level, हाँ, ये जो family Mhm, धरोहर हम लोग बोल mhm, रहे हैं, mhm, we are mhm, discussing all in the level of like individual level, or you can say mhm, family level. The same thing mhm. is applicable in the society level also. So Okay. Uh-huh, individual uh-huh, से इंडिविजुअल से जैसे हाउस होल्ड हो जाएगा, हाउस होल्ड से जैसे mhm, सोसाइटी हो जाएगा, सोसाइटी से ही तो पूरा नेशन, पूरा हम mhm, लोगों का mhm, द होल mhm, mhm, civilization all mhm, connected. So me being an Assamese, see when we say mhm, heritage, when we talk about culture, it is not only mhm, the heritage means only the monuments which we can see on which are the tangible, but that also includes intangible part. जो अभी मैं बिहू mhm, के लिए बोल रही थी, बिहू mhm. doesn't mean that आपको सिर्फ बिहू का ड्रेस दिख रहा है ये नहीं, but that intangible part, the बिहू songs, that Ah, those are intangible. Sorry, the narratives associated with all those. So those are also part of our heritage, isn't it? वो सिर्फ mhm, oral tradition mhm, में चलता ही जा रहे हैं, कई पीढ़ियों mhm, से चल रहा है. So, mhm. but being an Assamese, am I not feeling proud when I am talking about Bihu Exactly, tradition, isn't exactly. it? Yeah. So वो सोसाइटी लेवल में, वो हमारे स्टेट लेवल में आसाम का ये इट्स अ पार्ट ऑफ आसाम कल्चरल हेरिटेज. सो हम Uh-huh, इंडिविजुअल लेवल में जब कॉन्शियस हो जाएंगे, इंडिविजुअल लेवल में हमारे जब वो अवेयरनेस आएगा कि दिस इज आवर पार्ट ऑफ हेरिटेज, वी शुड टेक केयर ऑफ इट एंड वी शुड प्रिजर्व mhm, इट फॉर द फ्यूचर. mhm, अब जब वो mhm, अवेयरनेस आ जाएगा, देन वी विल डेफिनेटली वी विल गिव इट द to some sort of organization, some sort of professionals who can actually mhm, guide you, who mhm, can help you mhm, out to take care of. mhm,
और ऐसा Mhm. नहीं कि सब कुछ ले लिया जाएगा. Many times it happens that you know cultural heritage management people, they can give you the, वो आपको बता सकते हैं how you can take care of your you know ओह! ओके, part of. अच्छा। ऐसा नहीं है कि जब होगा तो कुछ घर पे नहीं रह सकते, you have to give it to the you know so it can always remain in the community level. It's always there. अच्छा, ओके, मतलब चाहे जैसे भी हो, अपने कल्चर को बचा के रखो। आइदर यू गिव इट टू देम इफ यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट और दे आर टीचिंग यू देन यू टेक केयर ऑफ इट योरसेल्फ, राइट? True, true, true. या। वही चीज तो मुझे हाउसहोल्ड लेवल में होगा, बट नॉट हाँ, इन द हाँ। सोसाइटी लेवल, हुँ, इजंट हुँ। इट? सोसाइटी लेवल हुँ, और हुँ। कम्युनिटी लेवल में जब ये होगा, तो वो हुँ, हुँ। उस कम्युनिटी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना, सो इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, ऑफ एंटायर कम्युनिटी कि ये अपना ये है, यू नीड टू टेक एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ओके, तो मैम ये सब शुरू कहाँ से हुआ कि कल्चर प्रिज़र्व करना है हमें? कहाँ से शुरू हुआ? वेयर डिड इट ऑल स्टार्टेड? कहाँ से शुरू हुआ मीन्स लाइक हाउ डिड आई स्टार्ट, और यू आर आस्किंग, या, और हाउ डिड यू स्टार्ट? हाउ डिड यू गेट इंटो इट? see, I'm an Assamese, as I said, and that is a, या। of course, that family हुँ, हुँ। upbringing matters. हुँ, हुँ। That हुँ, part हुँ। is there. And हुँ, हुँ। was the family tradition, how I हुँ, have हुँ। been, हुँ, हुँ। groomed. So my parents, we belong to a like Assamese family. We belong to a family where the traditions are followed, where that culture is followed, and like बिहू के दिन में क्या क्या रिचुअल करना है, हुँ, हुँ। you have to हुँ, हुँ। do, follow that kind of. So हुँ, हुँ। that is one part, of course, grown up. हुँ, हुँ। But from my childhood, I don't know, I can't exactly remember how did I start, but of course I used to hear a lot about anthropology. That is where my association with anthropology comes. So ओके। when I was in school, it was decided that I'm going to study anthropology. क्या होने वाला था हाँ, हाँ। कुछ नहीं पता, but I just know that anthropology is हाँ, the study of people. हाँ, हाँ। If you study anthropology, then you will know about people. And I हाँ, like हाँ। interacting with people. I'm हुँ, always हुँ। like I'm not a introvert, or I'm not not liking to socialize type. So हाँ, हाँ। बचपन से लेके. So I want to नाइस। study anthropology. That's it. And anthropology, and as I told you, Assam में इतने लोग हैं, इतने communities है. Every community is unique, and each community has its own beliefs, practices. It's a different culture. So I was हुँ, हुँ। always curious. It started हुँ, in हुँ। the school days, and हुँ, हुँ। uh, uh, हम लोगों के टाइम पे ना, नॉट हम लोगों के टाइम पे, इवन स्टिल देयर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, हाँ, हाँ। 11 and 12 वी नीड टू स्टडी इन कॉलेज. तो ओके। ये दिल्ली साइड में इतना नहीं है. 11 and 12 is मुंबई, there मुंबई in आई school. गेस। So Mumbai also, even in Mumbai also, 11, 12 I have seen college में पढ़ते, और हुँ, ईस्टर्न हुँ। इंडिया में भी, असम में भी. I'm not हुँ, very हुँ। sure, probably in West Bengal also. Like हम लोगों का 11, 12 हमें कॉलेज में पढ़ना था. So हुँ, I हुँ। got admission in Cotton College. Like I ओके। always feel proud also to tell myself as an Cottonian. Cotton College is हाँ, one हाँ। of the best institute of entire Northeast India. हुँ, हुँ। 1901 में established हुआ था, हुँ। and it's a very prestigious college. Cotton College में admission मिलना is a very, and I very openly, I feel proud, and like, Cottonian has a different kind of pride. Like, okay, Cotton College is हाँ, over, हाँ। something, something is there. Somebody studying in हाँ, हाँ। Cotton College. Because मुझे Cotton College में admission मिलना ही था, because anthropology पढ़ना है. So, but my like sports were good, so I took admission in 11th, matlab that we used to call higher secondary first year, and I opted for anthropology. And for me, it started there. So 11, हुँ, 12 हुँ। जो anthropology start किया ना, then I did हुँ, हुँ। my graduation anthropology honors and my post graduation in हाँ, हाँ। anthropology. I did my masters from Delhi University, but I हाँ, हाँ। did my graduation from 11 to the graduation in Cotton College. 5 years I have हुँ, studied हुँ। anthropology. Of course,
in 11, 12 with, along with other subjects, but anthropology Mhm, was my mhm, honors. So it all started mhm, with anthropology. In there, we had to study one paper called museum method. तो वहीं पे मेरे लिए museum studies like museology was introduced there. So after graduation, I thought that I want to study more about museums, and I developed that fascination towards museums. I always believe that museum is the source of knowledge. Every day you see the same object in a museum, you get to discover something new. So हाँ, उसी टाइम पे ग्रेजुएशन के टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी से म्यूजियोलॉजी का भी ये था, बट आई लव एंथ्रोपोलॉजी, तो मुझे सोशल एंथ्रोपोलॉजी करना था. माय स्पेशलाइजेशन इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी, and I mhm, did my social anthropology from Delhi University, and mhm, then I did my master's, another master's mhm, in museum studies, museology we call, from National Museum Institute, mhm, Delhi, mhm. and I did my PhD also from the same National Museum Institute. But in Okay. PhD, I tried to pull the theory of social anthropology and I experimented that in uh, museology. It is Mhm, it's called eco museum, more community museum perspective. Coming mhm, back to that social anthropology, as I say, and हाँ, my field was in northern part of Guwahati. It was a field in हाँ, Assam. So हाँ, it's more about a community involvement in हाँ, preserving the heritage through हाँ, हाँ, museums. हाँ, So mhm, that is mhm, where it all started. Uh, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, खैर. सो म्यूजियम से स्टार्टेड. ऑफ कोर्स देन म्यूजियम तो नौकरी भी तो करना था, स्टडीज तो हो गया, फिर हाँ, हाँ, पढ़ाई के हाँ, साथ देन आई स्टार्ट. माय फर्स्ट जॉब वाज इन सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर, महाराजा सवाई ओह मानसिंह वाओ, सेकंड. हाँ, City Palace Museum बोलते हैं ना. So I joined as a हाँ, हाँ, curator in that museum. That was my first job. And mhm, of course उसके बाद म्यूजियम फील्ड में ही बहुत साल काम करने के बाद then I was involved with Ministry of Culture, Government of India, mhm, and then I worked with Indira Gandhi National Center for Arts. There I started there slowly from museum exhibition and workshops and started dealing with folk art. और उसी टाइम पे मेरा archive side पे shift हुआ. There I started with ओके, an archive, and after that I from museum I slowly shifted towards the archive, and mhm, then uh, after working with the Indira Gandhi National Center for the Arts for a few years, then I shifted to little more, uh, specific kind of archive. That was an audiovisual archive. Then I worked with American mhm, Institute of Indian Studies, that mhm, archives and research center for ethnomusicology. So it's a mhm, audiovisual archive. There, mhm, then my journey continued with from ethnographic archives to the audiovisual archive, and now I am with a corporate archive. Now I work with the Aditya Birla Group. So I now work with the Aditya Birla Center for Archive and Research. So social anthropology is a museum and, but in all this, the love for the heritage and the motive for the heritage preservation, that thing remains constant for me. mhm, Mm, mhm, mhm. yeah, तो मैंने पूरा या बता दिया. मतलब कभी रुकते नहीं हो है ना, कुछ किया फिर I'm कुछ बोलने किया जा फिर रही कुछ किया हूँ. तो मैं भी बोलने जा रही हूँ. Yeah, it's a good transition. It's a very uh, like I enjoy it. I like it. It's not that no regret or nothing. It is a very smooth transition, and it's of course from Mhm. museums to the archive. But the core thing remains same. As I Yeah. said, along with the heritage, that anthropology Mhm. remains, it remains constant. हम्म, हम्म. Mm. अग्रीइंग टू योर म्यूजियोलॉजी पॉइंट, जैसा आपने कहा कि जब आप म्यूजियम में रहते हो हर दिन एक ही चीज देख रहे हो, बट हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है. रिलेटिंग इट टू माई सेल्फ, हमारे यहाँ पे जयपुर में देर इज अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, यू मस्ट नो. सो Mm. so I have been there some 3 to 4 times. Okay, before going to Albert Hall Museum, I had that thought in my mind कि यार म्यूजियम्स तो बहुत बोरिंग होते हैं, उनमें घूमने जैसा क्या ही है. But then
by God's will, I happen to go there 3 to 4 times, and every time I go there, there is something new that excites me, and बहुत अच्छा लगता है जाके. I mean, it's very good. Yeah. And खत्म भी नहीं होता. Albert Hall is a हाँ, huge building. huge, So, huge. yeah. So if you have to actually enjoy in museum, तो पार्ट पे देखना पड़ेगा. एक ही साथ सारा नहीं दे सकते. And every time हाँ, you go, you get to see something new, and it's the, you can say, the knowledge hub. सब कुछ है, बस explore करना है. हाँ, exactly. Yeah. जैसे आपने सिटी पैलेस में यू हैव वर्क फॉर सम इयर्स, कितने साल काम किया आपने वहाँ पे? City Palace, like all together, along with the government of Rajasthan's project, almost four and a half years. ओके, दैट्स क्वाइट अ टाइम. तो अब उसमें मेरे को दो तीन चीज बताइए, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट सिटी पैलेस. इज देयर समथिंग लाइक दैट? ऐसे कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, because City Palace itself is, the whole City Palace is such an interesting place. वहाँ पे सब कुछ है. Like वहाँ पे that huge टेक्सटाइल्स का अगर स्टार्ट करें, दैट ह्यूज जामा, दैट ब्लैक कलर, वो ड्रेस से लेके जो गंगा गली बोलते हैं, सिल्वर पॉट्स, इट सेज दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर पॉट्स, वो सिल्वर पॉट्स भी है. दे हैव वेरी रिच कलेक्शन ऑफ carpets, miniature paintings, the sile khana, the arms and armors, the textiles. It's superb. They have Potikhana, they have their manuscript section, which is, I mean, only few are on display. I don't know अभी अगर उन लोगों ने display change भी किया होगा, but they have a very rich collection of manuscripts, maps, plans. उनका library भी बहुत ये है. And of course that the whole palace, that itself is a place to visit, to see the work, ना जो architectural beauty वहाँ पे, मतलब just to see the palace itself is an amazing thing. Of course, the museum is very rich and one of the oldest museums of India, very well maintained, very beautiful. And बहुत कुछ है वहाँ पे. It's like किसी के एक लाइफ टाइम में तो खत्म नहीं हुआ. It's huge. एक लाइफ बहुत टाइम बड़ा में खत्म नहीं होगा? नहीं हो सके. It's huge. And बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत काम भी किया है इसके ऊपर. Lots of research required, and of course they are doing good, but maybe it can reach more to the people, and I'm sure कुछ शायद उन लोग अच्छा भी कर रहे होंगे. बिल्कुल. ओके. और ये क्यूरेटर कौन होते हैं? आपने क्यूरेटर वर्ड कहा कि यू वर्क एज अ क्यूरेटर, तो ये क्यूरेटर कौन होते हैं? Museum manager. You can see ओके. the museum manager. Like I'm just no. ये vocabulary, of course, it's not professional vocabulary, but हाँ. museum. So overall, एक म्यूजियम का इंचार्ज जो होता है ना, who takes care of the museum, all aspects, that person is the curator. ओके, ओके, गॉट इट. Now, if it is museum curator, but curator can be specific also. Say कोई अगर कोई एक एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो उस एग्जीबिशन को कोई क्यूरेट कर रहे हैं, then curator can be that exhibition curator also. But museum curator is the one who is the manager. ओके, गॉट इट, गॉट इट. मतलब मैम देखो, आप आसाम इतने साल रहे हो, यू हैव बीन टू राजस्थान, नाउ यू आर इन मुंबई, तो यू हैव बीन टू सम, नहीं, नॉर्थ इंडिया तो पूरा घूमा ही है आपने. तो ये कल्चरल कोई डाइवर्सिटी या फिर कुछ मेल जोल है दैट राजस्थान का कल्चर और असम का कल्चर कहीं मिलते हैं जाके, ऐसा कुछ है या इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट? Not completely different, but of course, India is a unity in diversity. So, yeah. But as you said, na, I have lived major, well, like part of my life in Delhi. It is ओके, so. दिल्ली. Delhi. I have lived in Delhi only throughout. I always say that I'm an Assamese from Delhi because I have studied there, and then I have lived there for long. So there are similarities, of course. There are, and वो कनेक्शन भी तो है. जो जब जो जयपुर के लोग, अ, आमेर, मतलब उस टाइम पे जो
ये these people they fought for Mughals और एज ए मुगल सेना से दे हैड अटैक्ड असम. तो अच्छा। ये पूरा कनेक्शन भी है इनफैक्ट. जो असम के यू मस्ट हैव हर्ड दैट लासित बोरफुकन, so we just हम्म celebrated 400 years of हम्म this. So हम्म ये जो उन्होंने उस टाइम पे the, for what he is so famous, तो वो जिस लड़ाई का सेनापति हुआ करते थे तो in that war also जयपुर के लोग ही on behalf of the Mughals actually they were अच्छा। there. Connection to है ही lot many, and especially in their if you see. इनफैक्ट आई रिमेम्बर उस टाइम पे, अभी मुझे नहीं पता इफ इट इज ऑन डिस्प्ले. आई हैवंट बीन टू हम्म, सिटी पैलेस फॉर सेवरल इयर्स अभी. उस टाइम पे इनफैक्ट एक असमीज महाभारत, इनफैक्ट असमीज मैन्युस्क्रिप्ट वाज ऑन ओके। डिस्प्ले इन सिटी अच्छा। पैलेस. अच्छा। अभी तो ओके। पता नहीं हाँ, कैसा है. सो हाँ 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 connection and of course it's all somehow other way same rituals, you can say the same celebration, नाम अलग है, चीज तो सेम ही है, हाँ। वही है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। there are some वहाँ बिहू मनाते हैं, यहाँ बैसाखी बन जाता है, बराबर ही है। okay yeah, kind of. गॉट इट गॉट इट गॉट इट। नाउ मैम, अब आप मुंबई में आ गए हो एंड यू आर वर्किंग फॉर आदित्य बिरला ग्रुप। सो जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था दिस करियर ऑफ म्यूजियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, तो वाज देयर रेजिस्टेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स कि यार ये कैसा फील्ड है, पीपल हैव नॉट इवन हर्ड अबाउट इट, इसमें करियर होगा या नहीं होगा? देयर मस्ट हैव बीन रेजिस्टेंस, सो वाज देयर रेजिस्टेंस और दे वर सपोर्टिव? uh, yeah, because see I belong to an era जब हम लोगों का मोबाइल फोन नहीं होता था. हाँ, I belong to हाँ। that world. So obviously you can imagine the communication इतना easy नहीं हम्म होता था. हम लोग, मैं हम्म दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जब पढ़ती थी तो I used to you know wait for कि हाफ रेट में जब एसटीडी कॉल करना पड़ेगा. घर पे लैंडलाइन हुआ करते थे. So I remember vaguely. ओके। uh, मैं जब हॉस्टल में, हाँ, ड्यूरिंग माय मास्टर्स डेज हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम जैसे मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ था तो माय ब्रदर हैड अ मोबाइल कॉल. वो तो इनकमिंग में भी पैसा लगता था तो आई हैड टू बी वेरी केयरफुल. आ जाता था. सो ऑफ कोर्स दैट वाज देयर क्योंकि हमारे टाइम पे वही है. एक तो साइंस पढ़ना है, साइंस नहीं होता है तो भी जाके ह्यूमैनिटीज पढ़ना होता है. तो माय पेरेंट्स वेर इनिशियली they also didn't understand. They thought that I am going for science. तो साइंस नहीं अगर पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज में जा रहे हो, देन इंग्लिश लिटरेचर. तो वो भी मैंने हाँ। नहीं किया. तो so it was like kind of, and I did good in like maths में मुझे अच्छा ही मार्क्स मिला था जो 10th का. हम्म तो हम्म, ऑब्वियसली ये है होता है ना कि हाँ मार्क्स में अच्छा मिला फिर भी साइंस में नहीं पढ़ा और ये ह्यूमैनिटीज में जाके आर्ट्स बोलते थे, हाँ हाँ आर्ट्स नॉट ह्यूमैनिटीज. हाँ हाँ, आर्ट्स साइंस यार। में तो आर्ट्स नहीं तो कॉमर्स, हाँ कॉमर्स पे होना ही नहीं हाँ था तो आर्ट्स पढ़ रहे तो साइंस क्या सॉरी ये हाँ इंग्लिश लिटरेचर हाँ और हाँ तो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स इस टाइप का कोई सब्जेक्ट लो. तो ये सब में जो था इवन लाइक व्हेन आई यूज्ड टू बिकॉज़ इन एंथ्रोपोलॉजी हम लोगों का पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी आल्सो वी नीड टू स्टडी, हाँ, प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी. हम्म हम्म सो हम्म माय मॉम व्हेन शी यूज्ड टू सी माय बुक्स बोलते कि ये इतना सूखा-सूखा पता नहीं ये सब पे क्या ये पढ़ते हो, ये क्या करने जा रहे हैं. But of course I am like so blessed with such a supportive parents. My हम्म dad has been in a government servant and he's a president awardee for his lifetime service. So of course I had always the support. but उन लोगों को यही था कि अब तुमको करना है तो करो. इट्स नॉट दैट लाइक नो यू हैव टू बी अ डॉक्टर और यू हैव टू बी एन इंजीनियर, ऐसा नहीं है. दैट वे आई हैव अ वेरी प्रोग्रेसिव पेरेंट्स. माय मॉम यूज्ड टू टीच इन स्कूल. सो हम्म, ये तो था कि एंड प्रोबेबली दे आल्सो हैड द कॉन्फिडेंस कि ये कुछ कर लेगी. कुछ तो कर ही लेंगे। इसीलिए ना लाइक बहुत ज़्यादा तो ये नहीं था. पैरेंटल प्रेशर हाँ जो आजकल के बच्चों में भी होता है, मेरे को उस हाँ टाइम पे भी मुझे लेकिन
नहीं था that way. हम्म That वंडरफुल आई मीन we used to have. मतलब उस एरा में पेरेंट्स इतना सपोर्टिव होना करियर को लेके इट्स बिग थिंग आई मीन इट्स अ बिग एंड हाउ अबाउट फ्रेंड्स फ्रेंड्स कैसे थे थे नहीं, अभी भी है. So, नाइस obviously, friends तो जो of course I have spent 5 years in Cotton College. जो एंथ्रोपोलॉजी के फ्रेंड्स थे, दे आर स्टिल क्लोज फ्रेंड्स. अभी भी आसाम में जब भी जाती हूँ टू मीट माय पेरेंट्स, आई हैव टू कीप सेपरेट टाइम फॉर देम. सो फ्रेंड्स तो अब तो बहुत ग्रुप्स बन गए अलग अलग. दोज वेर माय कॉटन कॉलेज फ्रेंड्स. सो सिमिलरली कॉटन कॉलेज से जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स दे आर नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट वी आर स्टिल कनेक्टेड. वो एक अलग फ्रेंड्स ग्रुप है. और म्यूजियम का ऑफ कोर्स नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से जो पास आउट है, अभी वर्ल्ड के जो रिनॉन म्यूजियम्स है ना, आपको मैक्सिमम में नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के एलुमनाई मिल जाएंगे. एंड माई टाइम में जो भी हम लोगों ने, मेरे से 1-2 साल सीनियर जूनियर जो भी थे, एवरीबॉडी इज डूइंग वंडरफुल. अभी इंडिया में स्पेशली आप कोई भी म्यूजियम फील्ड में बात करो, म्यूजियम लाइक इंस्टीट्यूशन और आर्काइव्स में, आपको नेशनल म्यूजियम के ये कोई ना मिल ही जाएंगे. ऑब्वियसली नाउ दे आर इन अ वेरी सीनियर पोजीशन, लाइक फ्रॉम राष्ट्रपति भवन म्यूजियम से लेके सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम बोलो, आप इलाहाबाद म्यूजियम, गुजरात स्टेट म्यूजियम, लाइक आप कहीं पे भी बोलो, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के वो तो है. एंड दोज आर friends and professional friends also. And as I said that we belong to the non mobile era, तो हम लोगों का फ्रेंडशिप अलग होता है ना. हम लोगों के पास अभी तो बच्चों के पास टाइम नहीं है ना, मोबाइल में देखना होता है, मैसेज रिप्लाई करना. हम लोगों के पास कुछ वो सब ऑप्शन नहीं था, तो हमें बातें ही करना होता था. So that friendship is different. वो तो है ही. यस वो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग. बहुत बहुत वैरायटी ऑफ ग्रुप्स है. Yes. शायद वो मोबाइल एरा नहीं था इसीलिए फ्रेंडशिप इतनी लंबी टिकी डू यू बिलीव दैट हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली, मैं तो यही सोचती हूँ और क्या. अभी ज़रूरत ही नहीं है वैसे फ्रेंड्स की, मोबाइल है ही. हाँ हाँ सब हाँ सबके लिए एक ही फ्रेंड है, एक मोबाइल. हम लोग को उल्टा था, मोबाइल नहीं था, बाकी फ्रेंड्स था. वो ट्रू ट्रू सही हो गेट इट आई जाएगा. गेट राइट. आई डोंट नो अभी का फ्रेंडशिप का. अभी तो आप लोगों का टाइम है. आप लोगों के ज़माने में यस लाइक मोबाइल एरा में कैसा फ्रेंडशिप होता है पता नहीं. अभी मेरा लिए फ्रेंडशिप मतलब अभी इस एरा में इफ आई मीट दे बिकम मोर प्रोफेशनल फ्रेंड्स. ओके, तो डिफरेंट हो जाता Okay, okay. Have you been to museums outside India? है. या मेनी. Like you worked in London, right? Yeah, I worked with a British library that was a Okay. part of a research collaboration from my previous organization. I told you, no, I Mhm, worked with American mhm, Institute of Indian Studies. mhm, mhm, From mhm, there, as part of a mhm, research collaboration, I worked with the British Library. And mhm, during that time, of course, British Library and British Museum. So I spent lots of time in the British Museum, and mhm, also, so if I talk about British Museum, I have to talk about, you know, I got the privilege to see, again coming back to my Assamese thing. Uh, there is uh, it is the pride of Assam, I can say, as a part of the heritage. It is called Brindavani Vastra. Let me talk about that textile piece. It's a mhm, historic definitely. textile piece from Assam. Uh, Mhm, all over in the world, there are total, I think 9 pieces of Brindavani Vastra. So this is mhm, not one particular one fabric okay. kind of. So pieces are there, no pieces. Mhm, mhm, So the longest 9 feet wala, I think that is the longest one, and the biggest mhm, piece is in British mhm, Museum. Sorry. So British, mhm, so I thought कि मैं जब लंदन में हूँ, then being an Assamese, it's a different kind of mhm. emotional bonding, okay, with the Brindavani Vastra. Yeah. The Assamese has a Brindavani Vastra is there, like it's a pride of Assam. So वहाँ मुझे I am really grateful to वो
like entire universe कि ये जो collaboration से I got a chance to go to the British Museum, and of course the people there, my lead curator Janet and many people were there जो जिन्होंने मुझे हेल्प किया, वो वृंदावनी वस्त्र, आई कुड सी द वृंदावनी वस्त्र, to get to see that piece physically, like to see that, that's a then one get emotional, like oh, can't believe कि मुझे ये देखने को मौका मिल रहा है। असम में अनफॉर्चुनेटली नहीं है उसका पीसेस, और ओके। not in India, only in Calico Museum in Gujarat it says that there is a piece of Vrindavani Vastra, but I have not seen Uh-huh, that piece. Huh? uh-huh. I don't know much about that. But in India, we don't have a piece of Vrindavani Vastra. So Oh. then, obviously, yes. And also, this piece of Vrindavani Vastra from Assam, the whole journey is not even very clearly known, but this whole piece has traveled from Assam, probably through Tibet, and from not probably, it is actually it how it reached the Tibet. There are many theories for that, but from Mhm, Tibet mhm. only it has gone to London. So that history part, that Oh. journey, that part is there. So it is not mentioned as an Assamese thing. It was from Tibet, but later on lots of research have been done. Exhibition भी हुआ, इसके ऊपर एक Mhm, catalog भी published है, and lots of research work. mhm, Many, Assamese people have worked on the Vrindavani Vastra. So mhm, I have also written few pieces. Some in say Assam State Museum का journal में भी published है, and also in some Assamese thing. And also I have written a blog. There also it is published. It is published. So काम भी mhm, हुआ है, but it's a matter of mhm, pride, Vrindavan University. And coming back to the museum visits, along with everything, of course, mhm, archival that experience is altogether different. But I could visit the British Museum again, and I could visit the British Museum stores, and could mhm, witness this historical textile piece. That is the mm, that was above all museums of the world. That has a different bonding. That is a different emotional connection, I mhm, can say. mhm, mhm, Besides that, due to work also, I had visited many conferences to present paper. I had visited many museums from Denmark to the Spain, and many museums actually, mhm, mhm, Southeast mhm, Asia, mhm, various mhm, parts in Europe, mhm. many museums. And Okay. I love visiting museums. So anywhere I go, if I come to know any small big Mhm, museum, it is always fascinating to visit, and, and mhm, even to know in the local level if there is museum. Then the museums are the mirrors of that local that area, no? That you know mm, about the culture. It is always mhm, interesting to visit local mhm, museums, especially. mhm, mhm, mhm. It's मैम, always, तो ये जो वृंदावनी वस्त्र के बारे में आपने बताया, कैन इट नॉट बी रिक्रिएटेड? आई मीन, यार इंडिया की चीज है, इंडिया में ही एग्जिस्ट नहीं करती। आई मीन uh, दिस इज सच it, एन आयरनी। आई मीन। uh, पर ये भी है कि प्रोबेबली आसाम के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एकदम बहुत ज़्यादा शायद केयर नहीं लेते, तो प्रोबेबली सरवाइव नहीं होता, इट्स वेरी ओल्ड, सो प्रोबेबली ये भी एक कारण है कि द वे इट हैज बीन प्रिजर्व्ड देयर, एंड आल्सो एज आई सेड इट वाज इन अ पार्ट ऑफ द मोनास्ट्री, एंड देन मोनास्ट्री से जाके लंदन पहुंचा, दैट इज आल्सो थ्री। ये हो रहा है, रिक्रिएशन हो रहा है, बट यू नो व्हाट, वृंदावनी वस्त्र, हाउ it says how Srimanta Sankardev has introduced the whole thing, and how it got weaved through the skilled weavers, how the whole thing was supervised, how the whole thing was created. ये भी पता नहीं चलता, it is not known, there is no established theory because of which that whole tradition of weaving Vrindavani Vastra has stopped. But yes, similar Vastra, similar kind of textile pieces are still weaved in Assam, or
और जो टेक्निक है ना, जो ओरिजिनल वृंदावनी वस्त्र का, वो भी थोड़ा सा ये है कि बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टेक्निक, इट्स कॉल्ड नाम्पा टेक्निक, जो Mhm. नॉर्मली जो असम इज ऑफ कोर्स दैट हब ऑफ लाइक वीविंग होल, you know, Kualkusi is the area. Not only Kualkusi, in every household you will find a handloom in Assam. तो Mhm. वो Mhm. लंपा टेक्निक अभी प्रैक्टिस भी नहीं होता है। सो Okay. अभी रिवाइव हो रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ लोग ऐसे शो पीस टाइप भी बना रहे हैं, डेकोरेटिव पीसेस टाइप भी बना रहे Mhm. हैं। नो डाउट नॉट एज ए वृंदावनी वस्त्र, बट Mhm. जिस पर्पस में यूज किया जाता है ना, सत्र, एज आई सेड सत्र, एंड ऑल्सो इन द नामगढ़, Mhm. द local Mhm. temples, Mhm. village temples, I can say, Mhm. they are, instead of Vrindavani Bastra, Gamusa is used, and that kind of Mhm. other other types of textiles are also weaved specifically for Okay. in the use of the namgars and the satras. So Got uh, it. yeah, but not So as we a, have found an alternative. of course, yes, you can say the alternative. Got वही है got कि it. वो Got जो ओरिजिनल पीसेस है, I'm just talking about British Museum only, but as I said, it is all over 9 or 12, मैं भूल गई, 12 pieces probably, or 9 pieces, 12। it. Okay. तो जैसे Mhm. चैप्स्टो, वहाँ पे भी यूरोप, इसमें यूके में चैप्स्टो म्यूजियम में भी, वहाँ पे भी एक कोट बना हुआ है, सेम वृंदावनी वस्त्र का ही, but थोड़ा सा मोटिव छोटा है, एंड अदर Mhm. पार्ट्स में भी है, Mhm. बट ये that that is a different than what we get to see आज के इसमें, यही है। Get it. I get it. Get it. I think uh, the last question would be, I mean, I can keep going on talking, and it's so interesting to talk to you. But yeah, how can someone make a career in this anthropology or museology? हम्म। Uh, See, first of all, you have to have the interest. Hmm. So Obviously. ओवरऑल एक तो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट तो होना पड़ेगा। करियर बिल्ड Mhm. करना है तो ठीक है, करियर इज करियर, बट वही है Mhm. कि पेरेंट्स के प्रेशर में कोई अगर साइंस लेके बच्चे अगर इवन आईआईटी भी क्रैक कर जाते हैं, आईआईटी एंट्रेंस भी, बट इफ दैट बच्चा इज नॉट हैप्पी, तो Mhm. वो वाला आउटपुट नहीं मिलेगा ना, दैट इज लाइक इट्स अ नोन फैक्ट। Exactly. सुनने को बुरा Mhm. लगे, बट दिस इज, सो दैट वे Mhm. इंटरेस्ट होना पड़ेगा। वो एक बाय बर्थ किसी, मतलब लोगों को होते हैं ना कि कुछ चीजें देख के हाउ यू नो हाउ टू Exactly. अप्रिशिएट Yeah. एन Yeah. Yeah. एन आर्ट वर्क। किसी को एक आर्ट Mhm. वर्क देखने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, देख लिया तो देख लिया, कोई भी बच्चों में। लेकिन उसी में से ही कोई बच्चा होगा कि जिसको वो आर्ट वर्क देख के लगता है कि यू नो हाउ ब्यूटीफुल, वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके ऐसा, मतलब देखेंगे या ऐसा बनाने का कोशिश Mhm. करेंगे। सो दैट इंटरेस्ट इज देयर, इंटरेस्ट लोग बच्चों में होता ही है। सो दैट इंटरेस्ट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। और Mhm. वो Mhm. इंटरेस्ट अगर होगा तो ऑब्वियसली वन कैन ऑफर। बाकी ऑल ओवर इंडिया वेरियस यूनिवर्सिटीज में Mhm. म्यूजियोलॉजी पढ़ाया जाता है। ओके, कम, Mhm. सॉरी, यू आस्क्ड मी फॉर द एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तो ऑल ओवर इंडिया में मेनी यूनिवर्सिटीज में एंथ्रोपोलॉजी है। ऑफ कोर्स सारे यूनिवर्सिटीज में एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता, बिकॉज यू नीड स्पेसिफिक काइंड ऑफ लेबोरेटरीज इन द Mhm. डिपार्टमेंट। तो एक Mhm. डिपार्टमेंट ग्रो करना इतना इजी नहीं है, तो दे मे नॉट बी इन ऑल यूनिवर्सिटीज, बट इवन इन एंथ्रोपोलॉजी मेजरली देयर आर थ्री पार्ट्स: फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंड देन आर्कियोलॉजी। तो बहुत Okay. बच्चे ऐसा भी होता है कि जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के, लाइक किसी को सपोज जेनेटिक्स में करना है, किसी को पॉपुलेशन स्टडीज में जाना है, किसी को Mhm. क्रिमिनल, ये सब फॉरेंसिक, सॉरी नॉट क्रिमिनल, फॉरेंसिक Mhm. एंथ्रोपोलॉजी करना है, तो Mhm. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक अलग लाइन Mhm. हो जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज अ Mhm. वेरी वास्ट सब्जेक्ट, मतलब Mhm. एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लिया ना तो ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन कवर हो जाते हैं, पर उसमें से Mhm. क्या आपको स्पेशलाइजेशन, आपको किसमें इंटरेस्ट है, दैट मैटर्स नो। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी से, जैसे मैंने बताया, सोशल एंथ्रोपोलॉजी से लाइक इट इज वेरी मच सिमिलर टू
मतलब मेनी एस्पेक्ट्स में सोशियोलॉजी और जो लोग एमएसडब्ल्यू करते हैं ना, मास्टर इन सोशल वर्क करते हैं, तो उन लोगों से भी कनेक्टेड है। इवन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी जैसे आजकल हम लोग डिजिटल ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग Mhm. सब्जेक्ट। सो Mhm. इस तरह का में लाइक hundreds of options, आपको किस में स्पेशलाइज करना है। एंड देन इफ somebody goes for archaeology तो एंथ्रोपोलॉजी से तो है ही, और स्पेशलाइजेशन करना है किसी को तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, डेक्कन कॉलेज का Mhm. तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सब नोन एंड Mhm. ये है। तो ये जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के बाद डिफरेंट इसमें one can build career in anthropology. Mhm. And Mhm. anthropology like even इग्नो में भी है बहुत लोग, if not possible for a regular Mhm. university, even Mhm. इग्नो में भी anthropology है। और then coming to museology, usually अंडर ग्रेजुएशन लेवल में नहीं, बट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में museology is one of the very interesting subject. म्यूजियोलॉजी में भी जैसे Okay. नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट में इट इज मोर ऑन आर्ट एंड हेरिटेज, बट इन सम यूनिवर्सिटीज Okay. म्यूजियोलॉजी में ये भी it is जैसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स है, Mhm. तो उसका भी Mhm. स्पेशलाइजेशन होता है। और Mhm. म्यूजियोलॉजी के लोग बहुत लोग तो इफ इन दिस म्यूजियम इस लाइन में जाए तो बहुत लोग कंजर्वेटर्स बन सकते हैं, दैट आर्ट कंजर्वेटर्स। अच्छा. They Okay. are, it's a very unique profession and very beautiful profession, conservators. So Mhm. Mhm. they art conservators to like who can do the restoration like textiles, Mhm. paint, Mhm. Mhm. restoration Mhm. just, so they can go Mhm. for that profession. uh, Along with the conservation, what I have been saying, na, where like one can be a good conservator, like Mhm. restorer, Mhm. and also one can study the art history, that history of art, if one has to, one Mhm. can wish for studying that. MS University Baroda has a very good department. It's one of the oldest Okay. department, and also in the National Mhm. Museum Institute and many universities Mhm. in India, uh, one Mhm. has that option. So like I'm talking about overall in the museum context, okay? So in being in museum profession, one can become a museologist, that curator thing which I said Mhm. already. And from there Mhm. also one can do specialization, किसी कोई exhibition Mhm. designer बन जाते हैं, Mhm. किसी को Mhm. रिसर्च अच्छा लगता है, किसी को लाइक Mhm. प्रिजर्वेशन पार्ट अच्छा लगता है। सो सबका Mhm. अलग अलग, ओवरऑल यू गेट द ट्रेनिंग, एंड देन उस हिसाब से Mhm. प्रोफेशनल जो भी उनको जिनको ये करना है, लाइक माय इन से माय बैच और लाइक माय सीनियर्स एंड जूनियर्स पीपल, सम पीपल आर नाउ like known exhibition designers. So some people have become very good educators. They are into the Okay. education, museum education Mhm. is a very vast field. So some people have concentrated more on the research and documentation. Like if you अच्छा. say my thing was also, of course, research and documentation was one of my interest area also. But along with Mhm. that, my specialization was in community museum. So community Mhm. museum is something which brings more social anthropology together, like more, Mhm. I mean, closer, not together. Mhm. So Mhm. where you can, go for the community development, sustainability, and all Mhm. things we can talk from Mhm. that angle. But that coming back to that preservation, that documentation part, uh, which helped me, if I have to give Mhm. my example, it helped Mhm. me to work in the archives. So with the training in museology, with the training in Mhm. museum Mhm. study, one can also go for archival research or archival management also. Though there are separate courses for archival management, National Archives of Mhm. India offers a very good course. But besides that, Mhm. in from museum studies also one can work with the uh, archives. So one can build Okay. career in that archival management also. And in this Mhm. context, I must say, Ankit, scope for it. So what is happening? People have become very conscious about their collection, and now many people they want what their legacy material, na, that to be organized. In the archival Yes. management, that is the best part. When you have an organized collection, when you know this
particular collection I have received from so and so sources, from Mhm, where it has mhm, come, whatever. Isn't it mhm. good? Even in our personal collection, Yes, isn't it? yes. Like you are, like you now you are a student. I have, no, I being an like profession in this profession for so many years. I have also developed one collection, and I'm sure you as a student, you must be having Mhm, some mhm, good collection, say your mhm, books collection, or mhm, say mhm. for example, isn't it always good to organize that book class, your when Exactly. you suppose classify the books, Mhm, you mhm, categorize them, you have made a proper mhm, list, and you know which mhm, book where you have kept, you have the proper mhm, location of mhm, the book, you have the complete mhm, record, you know whom you have lended mhm, the book, from whom you have borrowed mhm, this book, how you got the book as a mhm, gift or as you mhm, purchased it, from where you have purchased, from where you have so lots of information on your collection. So it is always good to record those things. So in post COVID, especially people who are having like a little elderly people, they have this kind of collection. They are wanting now that their collection to be documented and archived. So this is a kind of awareness, you can say. This is a kind of consciousness which has developed post COVID. So many people are now coming up, and they are wanting their collection to be preserved, collection to be archived. mhm, So in that case also mhm, lots of career opportunities are being archives, mhm, museums में बहुत opportunities mhm, है लोगों को. mhm. And one Okay. can be Okay. individual, not individual, what you can say, like uh, freelancing kind of, na? You can be your own entrepreneur Mhm. so with this training. Oh, wow. That's Yeah, good. That's yeah, good. yeah, yeah. You can have, absolutely, you have your own farm kind of. You have your own organization which can give, which can help you establishing museums, who can help Mhm, organizing exhibitions or creating an mhm, archive. सब mhm, possible है. mhm, mhm, Very mhm, vast. mhm. One question that would definitely arise in everyone's mind, is there money in it? I mean, is that a stable career? Money, yes. That, see, काम अच्छा होगा तो कोई भी करियर में कहीं पे भी अच्छा होता है. Of course, this Ah, is an art and heritage field. It is not like like a corporate employee. mhm, The corporate houses में जिस हिसाब से पैकेज मिलते हैं, ऐसा नहीं है. Because mhm, this is art and heritage field. इसमें बहुत, it's not everything from the head. Lots of things from the mhm. heart also goes. ना Hard, लोगों yeah. को ये है. So, and above everything, when you like to do something, तो उसमें अगर पैसा थोड़ा कम भी आए ना, उसमें भी मजा है. Mhm. When I, Exactly. I used to work with the folk artists. Say suppose when I'm organizing a workshop on a folk painting. से मिथिला पेंटिंग का एक वर्कशॉप हो रहा है. वहाँ Uh-huh, पे बहुत सारे मिथिला women from Mithila region have come. They are, they are singing and they are painting. mhm, And when I'm with them documenting their work for 5 days, उसके लिए मुझे बहुत mhm, कम भी पैसा मिला ना. But the kind uh-huh, of, happiness, the kind of uh-huh, learnings from that workshop, that matters a lot. uh-huh. Of course, पैसा तो चाहिए, Hmm. no doubt. But yes, I can say it's a very moderate way में ही होता है. It's not something very heavy package वाला. It's, Okay. पैसा कम होगा पर प्यार बहुत है. of course, yeah. And ultimately that enjoyment ना, when you have a busy Yeah. day, उसके बाद आप अगर after a like hectic day जब बैठ के, when when you see a very good artwork, एक you Mhm. get a peace of mind ना, वो बहुत better करता है. I like, at least me being in this profession, definitely. Definitely, definitely. Yeah. Because at the end, our goal is happiness, right? Be Yeah, it coming from 20,000 or coming from 20 lakhs, it does not yeah. matter, right? एग्जैक्टली क्या मतलब, ऑफ कोर्स पैसा तो चाहिए, पर वही है Uh-huh. कि सिर्फ पैसा ही है तो नहीं चलेगा ना. तो वन या सबका ऑफ कोर्स Yeah, I think it's a full circle जहाँ से आपने शुरुआत किया कि सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. इंटरेस्ट होना चाहिए. और जब इंटरेस्ट Exact. होगा ना, तो कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट, लाइक बड़े बड़े सीईओज, कितने लोगों का Mhm, कितना ये सब में इंटरेस्ट है. हो सकता है कि उनका बहुत mhm, हेक्टिक
लाइफ है. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ देयर इज ए गुड एग्जीबिशन, सपोज कहीं पे पेंटिंग एग्जीबिशन चल रहा है, तो इफ दैट पर्सन हैज हम्म, द इंटरेस्ट ना, वो जरूर जाएंगे वो एग्जीबिशन देखने. वो हम्म, एग्जीबिशन जान के सीख के जो मजा आएगा ना, वो ठीक है. काम एक जगह है, बट that is a different, altogether different experience. got it. Yes. Thank you It's so never much, ma'am. I am really honored. बहुत मजा आया बात करके. Hopefully we'll sit again for a different podcast. This time an offline podcast, probably. Thank you so much for being I there. would love to do that. Yeah. Thank you so much, ma'am. Well, thanks to you, I'm taking lots of time, but it's really nice to talk about. And as I said, I always love to interact with people. So it's like thanks for coming, like reaching to me. That is a big thing. Okay, and you are No, doing I this. mean, saying yes is a big thing. I mean, that you are so sweet all Mm. the way. We have been talking Yeah. for months and you are sweet. You're very sweet. Thank you for Yes. being that. I'm really happy that along with your studies, you are doing this. Right? This is very much required. This is your interest, isn't it? That is what I was talking. And you will do extremely good because this is your interest Thank you. area. And I'm really happy to see you that along with your studies, you are continuing with this also. And please carry on. You know, do Thank like you. Thank you. invest more, do more things, and definitely you will. Oh, I would love to see you, Definitely. in a I much definitely, I'll make you proud. I'll make you proud. yeah, Thank you. Thank you so much. it will be a pleasure to see you, and I wish you all the best. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much.